जब एक प्लेन बादलों के ऊपर होता है ना तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है, लेकिन जब वो बादल हटते हैं और नीचे पहाड़ दिखते हैं ना तो बस प्यार ही हो जाता है। पिछले 20 सालों में कुछ सैकड़ों फ्लाइट से ट्रैवल किया होगा, लेकिन लैंडिंग के बाद जैसी खुशी आज मिल रही है ये कुछ अलग ही है यार। हिमाचल के 3 मेन एयरपोर्ट्स में से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है गग्गल या फिर कांगड़ा एयरपोर्ट। इट इज अपैरेंटली द ओनली वन विद रेगुलर एंड डेली फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम दिल्ली। यहां पहुंच के ज्यादातर टूरिस्ट की डेस्टिनेशन होती है धर्मशाला, मैक्लोडगंज या बीड, बट टुडे इट्स टाइम फॉर समथिंग वेरी स्पेशल। Honest confession, like most of us, even I overlooked Palampur until very recently. But the first glance of the sleeping Himalayas covered with snow made my heart leap with joy. और वो जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट की थकान होती है ना, वो एकदम मिट गई। Palampur में I was hosted by Lamrin Resorts at their boutique villas Lamrin Norwood Green. Located at the Bundla tea estate, these villas are a feast for your senses. Overlooking the tea plantations with a backdrop of snow-capped Dhauladhar mountains. This place is a paradise for people looking for solitude and peace. The property is built more like a luxury home than a typical resort. They have a cluster of 4 luxury villas where each villa comes with a private lawn, a living and a dining room, 4 bedrooms and an exclusive butler. अंदर आते ही सबसे पहली चीज जिस पे नजर पड़ती है वो है यहाँ के classy aesthetics and warm lighting. It's a perfect place to curl up with a book and a drink or spend a cozy evening with your loved ones. On the first floor there are 3 bedrooms, 2 of which face the tea estate. लिविंग रूम की तरह यहाँ का डेकोर भी काफी एलिगेंट है। The wooden furniture, the curated artwork and the light color tones, all of it is very pleasing to the eyes. And finally, my favorite spot. मेरे आने से कुछ दिन पहले ही snowfall हुई and that's why the higher mountain ranges are all enveloped in white. Hang around, have some coffee and just soak in the view. This is indeed the best seat in the house. Palampur seems to be the perfect destination where one can spend a leisurely vacation just retiring in the lap of nature. At the same time, people looking for unique experiences won't be disappointed either. Around 13 kilometers from Palampur lies a village and artist colony named Andretta. इस जगह के बारे में करीब 3 साल पहले मेरी एक पॉटर फ्रेंड क्षितिजा ने बताया था, लेकिन देखो फाइनली आना हुआ आज। Andretta has been phenomenal in introducing studio art pottery in India. This place is a result of the efforts of late Sardar Gurcharan Singh, who had set it up in the 80s. Later it was taken forward by his son and daughter-in-law Mansimran and Mary Singh and their friend Jugal Kishore Sankhyan. Today it's run and managed by Shubham Sankhyan, who left aeronautical engineering to carry on his father's legacy. They run a 3-month residential course where one gets a chance to learn the art. But I have come here just as a day visitor to try and see if I have what it takes. What we try to do over here is create just some honest pieces with using all the local materials, local clay, with doing rangoli patterns on that and create something which is unique but yet so simple as just a small plate or a bowl or a cup which you can use it in your day-to-day life. And when you say create, तो ये do you create it to sell it? Do you create it to display somewhere? See, over here we create it for people to use it. So हम ये चाहते हैं कि लोग use करें. I was in the world of pottery since before I didn't even know कि I am in this world. अच्छा. Yeah. So think about it. I'm just 2 years old. My father is here learning pottery also along with it and here, and I've grown up literally being here. So yeah, that is something my childhood has been like.
मम्मी बोलती नहीं है कि मिट्टी में मत जाना, है ना, गंदे हो जाओगे। हमारे लिए हो जाता घर में मत रहो, जाओ मिट्टी में खेलो। सो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा यूनिक रहा है, क्योंकि मैंने कभी अपनी मम्मी को सुना नहीं है बोलते हो कि मिट्टी में मत जाना, गंदे हो जाओगे। मैंने हमेशा उल्टा ही सुना है कि जाओ और सीधा घुस जाओ, सीखो, करो, बनाओ, देखो। सीखो भी नहीं। आई डोंट थिंक इवन माय फादर हैज एवर सेड टू मी दैट यू शुड लर्न पॉटरी। ही नेवर सेड, he's like, you want to do pottery, you should just learn it, like you should just do it, like he never, like that is the best part. If parents tell you something to do, no, I think आप हमेशा resist करते हो, आप वो हो जाते हैं मैं ये नहीं कर रहा, मैं मुझे ये नहीं करना है। But for me it has always been different, that I just liked being around here. I consider myself really lucky that my father took a right decision. I've been under Mini Mansimran Singh and was able to learn from him, and able to be in such a place where I have a creative liberty of creating anything, and this place can provide me a space where I can, in short, sell that kind of a thing so that I can make more. So these are the two deposits we have. One is the local clay, this is the field clay. Another one is the mountainous clay, volcanic clay. So we require these two to provide a proper consistency and the kind of firing range we want to go. So अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी को शुरुआत करनी है और क्ले खुद बनाना चाहता है, अपने बैकयार्ड में बना सकता है। बैकयार्ड गए, थोड़ा सा डिग इन किया ताकि जो मोटे कंकर हैं वो निकल जाए, और मिट्टी को आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको पानी में सोक करिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसको एक छन्नी से छान लीजिए। जो आपके पास क्ले बचता है उसको धूप में रख दीजिए, सूखने दीजिए, और आपके पास क्ले रेडी हो जाता है। ये आपके थोड़े कपड़े बचा देगा। नहीं नहीं यार, मिट्टी में आए हैं तो थोड़ा तो गंदा पता चले ना, थोड़े बहुत तो निकाल दो, फिर आपको अच्छे से गंदा कैसे। ठीक है, सबसे पहले केयरफुल रहना है। इनको बोलते हैं किक व्हील्स, इन पे आपको किक करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्पिन। तो इसके लिए आप क्या करते हो, आप ऐसे किक करते हो। मोमेंटम व्हील्स होते हैं, नीचे वेट ज़्यादा है, तो जब स्पिन करते हो तो वो फास्ट घूमना शुरू कर देता है। देन यू रेस्ट योर लेग एंड यू टेक ए स्पंज एंड यू क्लीन अप द व्हील। मेक श्योर योर हैंड्स आर वेट, यू होल्ड योर हैंड्स एंड यू स्टार्ट कंट्रोलिंग द क्ले। There are 3 points in clay, top, middle, bottom. आप क्या कर रहे हैं, आप सेंटर करने की कोशिश कर रहे हो क्ले को। आपको क्ले को एकदम बीच में लेके आना है। उसके लिए आप होल्ड करते हो और इन तीनों पॉइंट्स पे प्रेशराइज करते हो क्ले को। फिर उसके बाद आप इसको कोन करते हो। कोनिंग का मतलब है क्ले को ऊपर लेके आना, और फिर क्ले पकड़ के उसको नीचे पुश करना। इससे क्ले प्रिपेयर होता है। यू मेक इट लुक सो सिंपल यार, तो ऐसा लग रहा है आर्ट फॉर्म यहीं पे ही बन रहा है। वो पहले रैंडम शेप था, फिर गोल हुआ, एकदम से कोन बना, अभी एकदम से इट्स अगेन फ्लैट। प्रैक्टिस की बात है सारी। उसके बाद सेकंड स्टेप जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग। तो आप थंब पुश करते हो और इसको ओपन करते हो। स्टेप 3 आता है जिसको बोलते हैं हम पुलिंग। उसमें आप क्ले होल्ड करते हो और we allow it to go. But how did you make it happen? वो साइज कैसे इंक्रीज हुआ उसका? वॉल्यूम है। आपकी फिंगर एक एक्सट्रूडर की तरह काम करती है। आप उसको होल्ड करते हो, क्ले उसके बीच से निकल रहा है, तो मोटी क्ले थी, पतली होगी तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं तो जाएगा। सो इसीलिए वो कॉम्पनसेट कर रहा है हाइट। सो सिंपल साइंस। इसके बाद की शेपिंग आप कर सकते हो। करोगे? आओ आओ आ जाओ, आप बैठो। टू बी ऑनेस्ट, आपने केयरफुल रहना पाँव का। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि दिस इज इट, बन गया है। मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन विद इट। क्रिएटिविटी को आने दो, फट के बाहर आने दो, कोई बात नहीं। सो आपने क्या करना है, देखो वेरी सिंपल। When you hold it and you let it bring it in, squeeze it, it becomes smaller. When you put your hand inside and you push, it goes out. Let me try it first. Just hold it, get the feel of it, get the hang of it, how it feels when you hold. If you put your hand inside, do one thing. No.
Then 2 fingers tea here. Hold it, go inside, and then curl your fingers. मोड़ो. See? आप बोल रहे थे टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा? Not bad, yeah, not bad. हाँ? Right? Now you hold it and you give me hands, and there you go. You have your first pot. There you go. Not bad. Palampur is famous for its scenic beauty and tea gardens. The lush plantations with a backdrop of the gorgeous Dhauladhar mountains add to the charm of this place. And to get a closer outlook, I decided to visit Wah Tea Estate, one of the largest manufacturers of tea in the Kangra region. Wah Tea Estate is the largest plantation in the Kangra Valley. It's spread over 526 acres. The estate was established in 1857 by the British, and they were here till 1905, till there was a major earthquake. Oh, okay. Due to that earthquake, the Britishers left the area, and the estate was then taken over by a man called Sikandar Hayat Khan, Okay. who came from a place in Pakistan called Wah. And that's how we get the name of the estate. So the estate is named after the previous owner's motherland. And my family took over this estate in 1953. So since then it's been a part of the family, and now I'm the 4th generation planter looking after the estate. And I must say that you are the youngest planter I've met. I've met a bunch of planters, mostly across south of India, in the Nilgiris, Ooty, Kunnur, Kotagiri, wo belt mein. So I think, it is a legacy business. We've been in this for a long time. My great-grandfather, grandfather, father, and then now me. But it's very challenging, and when I joined it, I realized that there is a lot of scope, but there's a lot of hard work as well. Sure. So I think the challenge is what is keeping me driven so far. Because the main thing with tea is plucking. Right. आप जितना अच्छा पत्ती तोड़ेंगे उतना अच्छा चाय बनाएंगे. And that is best done by hand plucking, which is done by people. Okay. Because what we pluck is selective. It's like any other tree. When you see the new leaves come out, they're always lighter in color, Right. and then they become more mature. Right. So what we want is the new leaf, which is, and usually if you see any packaging, you'll see it's 2 leaf and a bud. So ideally that's what we want to pluck. So something like this is what we want to pluck, which is the 2 leaf And a bud. and a bud. Okay. See, the main difference between green tea and black tea is oxidation. Simply if I explain to you oxidation क्या है, अगर आप एप्पल लेते हैं और एप्पल को आप काटते हैं, over time वो skin brown हो जाता है. Right. That is because oxygen reacts with the fruit. Tea में भी वही होता है. When we pluck the leaf, we have plucked it, so oxidation process starts. For green tea हम लोग को वो बंद करना पड़ता है. For black tea we let it fully oxidize. Post the plantation tour, we went for tea tasting at their cafe called the Tea Room. With the smell of tea in the air, rolling tea gardens all around, this place perfectly complements the scenery surrounding it. My dad's mama was a politician, so he got him to do the opening. Everybody has a preference because they've been used to drinking a certain kind of tea. But if you start changing or moving to different kinds of teas, you'll get different flavors. If you look at the cup, black tea you'll see is more orange or reddish. Right. Green tea is more yellowish or Yellowish, greenish. creamish, yeah. And again, green tea should look like that. Color नहीं आना चाहिए. जो लोग बोलते हैं ना कि color क्यों नहीं आ रहा है. Green tea should be pale yellow green, whereas black tea should be more on the reddish orange side. We've realized कि इंडिया में सब लोग मसाला चाय पीते हैं. We've made our own version of the masala tea, but you don't have to add milk in it. So nowadays वो भी है ना कि a lot of people say they are allergic to milk, Yeah. or a lot of milk teas are not, like milk is not
required for the human body. True. So we've just made our own version. So it's got the same spices and the flavors, but it's a tea which you can have without milk. So you guys can take a shot glass and a spoon and you can taste all the flavors. And then you spit it out. Oh. The reason we do that is you're sucking in oxygen, जिससे और flavors निकलता है. So that is why आप पुराने जमाने में देखिएगा लोग बहुत लोग कप प्लेट में पीते हैं and then they करके चाय पीते हैं तो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लेवर्स निकलते हैं. So that is the reason why आप टेस्टर्स कभी देखिएगा वाइन में भी यही होता है. You take it in your mouth and you swirl it. Swirl it. उससे you're just adding oxygen to release flavors. वो तो यहाँ पे ही आते ही द फ्लेवर इज सो स्ट्रॉन्ग, यहाँ तक आते ही आपको पता चल जाता है इट्स रोज टी. It is definitely our best seller. The best place to wind down after a long day is to have a cozy, comfortable home waiting for you. और उसको अगर अच्छे खाने और अकूस्टिक म्यूजिक के साथ गार्निश कर दिया जाए तो बस और क्या ही चाहिए. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. अफसोस है कि वो मुझसे कुछ उखड़ा रहता है. मेरे वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. ना जा डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं अब चाहत में तेरी. Palampur has been such a revelation for me. And even though मैंने अभी एक ही दिन बिताया है यहाँ पे, but I can confidently say that it has all the makings of becoming one of my favorite destinations. छुपी जांदा चंद्रमा, छुपी जांदे तारे हो, छुपी जांदा चंद्रमा, छुपी जांदे तारे हो. दिए वाला नहीं छुप दे दिलां दे प्यारे हो. दिए वाला नहीं छुप दे दिलां दे प्यारे हो. Thank you guys, thank you so much, thank you.